So let's start the course. Now we have to go to the Matlab, and then the task is navigate to your Matlab desktop and click the click the app tab from the Matlab tool strip. Under the simscape, click the battery builder icon. Okay. Battery builder, simscape. There is load follower and uh, I can't say anything like battery builder. Uh, 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 Setup to run on hardware. This is also one of the most important thing that I have to that I have to learn. That is Linux runtime manager, hardware on board, system on chip, run on custom hardware, and etc. First, we have to go to the battery management. So, what? Sorry, what we have to do? We have to go to the app section. In that, we have to go to the simscape and we have to search for battery option. Okay. Battery builder icon. You can see there is no battery builder icon. There is no battery builder icon here. So can I go to the battery builder fault analyzer, which is needed for FMEA? Okay, model discretizer. No. Battery modelizer. How can I go to the battery modelizer when there is no battery modelizer app in this system? Nope, there's no battery modelizer here, and because there is no battery modelizer, I can't use this. Under simscape, there is no such a thing known as battery modelizer. So let's search for battery modelizer. There is nothing like battery modelizer here. Okay, so we will not do this part in online mode. Instead of that, I will go to the first. I have to close this, leave. Now we will go to the Matlab desktop, and there I will learn about that because it will be easy to watch that is the battery modelizer app does exist in Matlab or not. Because I have Matlab desktop, it will be easy for me to understand if there is a model similar to the given data or not. Okay. It will take some time. First we have to refresh because Matlab use a pure CPU logic. So it is a CPU based app, and this will give us some stress to my CPU. That's why apps. No, first I have to go to the app section in simscape. Yes, battery builder. What we have to do, we have to go to the Simulink option. This will take some time, and then I'm feeling very tired and sleepy. Okay, so from here we can go to the next part, that is
the learn option. It's taking too much time. It's like solid state electronic devices where printing is the key. Okay. There are continuous learning opportunities available that will help you to stay ahead of the game. Hmm. Huh. Thank you for the quote of the day. But hmm. Types of microcontroller. First is Arduino. Second is 32. Hmm. ESP32. It's the battery. Oh, this is the code that is battery singling battery operation. Raspberry Pi Pico Atmega 3286. Then there will be STM 10Z MSP430, SAMD21, Adafruit, STM 8513F. There's a lot of microcontroller. Running. It is still running and loading. So how to go to the embedded system learning road on. So if you want a roadmap for embedded system, then you have to first learn about the fundamentals of electronics. That is your step one. After that, step two will be C programming, which includes C basic or C++. After that, okay, we will go to the battery builder pack. Yes. So after that, you have to go to the microcontrollers. What is microcontrollers? After that, we have to go to the embedded C programming, then real-time OS, that is RTOS basics, and embedded projects and IoTs. Then you will go to the embedded field. In embedded field, huh, 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 huh. Sorry. There are some posts on LinkedIn which are too childish for someone who is at 32 or they're at their 30s or 32. So this is like having some kind of a joke, because what they are posting I have already done when I was in 8th grade. So it is like a joke for me. Sorry, no offense to anyone, but it is literally like a joke for me. Okay, we have to go to the app, then we have to go to the battery builder. Battery. Where is the battery builder? When I start here, there is no battery builder option. You can see there is no battery builder of load follower analyzer and variable scaling analyzer. There is no battery builder. You can see in this here in the simscape library, you can see battery builder, flexibility, and graph option. There is nothing like battery builder there.
solution. Okay, we have to go to this part, and in the create section of the battery builder to the script, set create cell to create a new cell object. And how can I do that? Let's go to the battery builder. Why I'm facing such kind of problem, and I'm at the verge of quitting this course. Okay, yes, the battery builder option is finally open. Yeah. Now you have to go to the new cell option. Now what I have to do, in the cell creation of the battery builder, so click cell to create a new cell object. Select new cell object from the battery browser panel on the top left tab. uh, where is the battery browser? Huh. Okay. Select new cell object from the, yes, there is selected. In the geometry section of the cell properties panel on the right of the app, where is the cell property? This is a cell property. Change geometry to pouch. Pouch. Then from drop down option, set length and height to 0.3 and 0.1. And height will be 0.1. And what about the thickness? Change the tap location to oppose. Next, in the cell properties section, set capacity to 27 and click apply. Where is capacity? Apply. Apply. Next, what we have to do, in the battery builder do script, click like, okay, it is oh, I can see the battery cell. It is like a pouch where I have entered the thickness, length and width of the battery with the capacity. This is good. Now next thing is, in the battery builder to script, kill export button, then export to the workspace from the drop down menu. Export from workspace. Oh, sorry, this is export. Huh. We have to do the import part.
Oh, sorry, to workspace, export. Okay, so now the battery cell is already exported to the workspace. Yep, it is perfectly exported. In the cell module option of the cell properties panel, change T dependency to yes and thermal port to model. Change T dependency in the cell properties panel. You have to change the T dependency to yes. Where is the T dependency? There is no T dependency like option here. Parameterizer. Let's find out the options like T dependency. There is a mass, energy, and model option. T dependency into yes. Then we have to click on apply and OK. Am I right? No, we have to go to the thermal port to model. Thermal port to model. Thermal port to model. We have to click on apply. Then and export object to the workspace. Again, we have to export the object to the workspace. Export to the workspace. Yes, export. And okay, thank you for exporting the cell. So I will give you the result that you can see there are two new cells. That is nothing but our batteries. In in create section, click parallel assembly to create a new parallel assembly object. Where is the parallel assembly? Parallel assembly object. In parallel assembly property section of the parallel panel, click select in the pop-up window. It is like machine learning app in a Matlab, but with different type of concepts. Now click select, a new window will be pop up. Then we have to select the new cell and click OK. Set the num parallel cell to 3. Click apply. Okay, we have to export the object again to the workspace. In create section model, click model to create module. Then after model, what we have to do? Again we have to click on the select option. Then there will be a pop-up option. We have to select new parallel assembly. Select new parallel assembly. We have to click on OK. After we have to click on number of series assembly to 2, number of series assembly to 2. Then we have to go to 0.04. And after that, I have to click on apply. Again, apply. Okay, this is looking cool because it is looking cool. I've created battery. I have created a battery. It's just cool for me. uh, Hover the mouse over the 3D plot of the new module displayed in the battery selection tab. It will show 4 options in the top right corner. Selected battery. We have to go to the
Okay. Now hover the mouse over 3D plot of the new module display in the selected battery tab. Then what? It shows four options in the top like corner. Click on show height simulation strategy. It will show all the blocks are considered as a single cell together. Yep. Now this will be my single cell. In the create section, okay, where is the in create section, click the model assembly to create a new model assembly object. Sorry, module assembly. Click model in creation option. Nah, module assembly. In model assembly, we have to again click on select, then new pop-up window will be open. Then we have to add a new module and we have to click on no, okay, okay, new module, apply. The new model is already there now. Then why does not again we have to export this to the workspace. How many times we have to export such thing to the workspace? Huh. Currently, I don't want to learn about battery modulation because I don't understand what is the battery moduling. No, sorry, modeling. The create section, click the pack to create a new. We have to create the pack. Create a new pack where we have to click on select. Then we have to click on new assembly. We have to add a pack. After that, we have to set the internal module assembly gap to 0.04. To click on the, then we have to click on apply and export to the in the thermal model option section, change ambient temperature thermal part to cell based thermal resistor. Ambient thermal part. Where is the ambient thermal part? In the thermal option in the thermal model option. Oof. Cell based thermal resistance. Then we have to click on the apply and then we have to export this model to the workspace. Okay. Okay. बिल्कुल इच्छा नहीं है, पता है क्या, फिर भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या है, इच्छा मर जाएंगी ना, मजा नहीं आएगा. New model. Ouch, ouch, ouch. Oh. There is no task. Ah. Oh. Okay. Now we have to close the battery builder. We have to add the associate, that is
That is state of charge. Add the following block: control current source. Current source. Okay. Next. Okay, we have to add a simulink to PS converter, not PS to simulink. Huh? Does the model contain the following block constant? Okay, we have to add a constant block. Literally at change the constant block value to -5 and connect it to the controllers. We have to connect it to the controller. Connect the controller source to the negative constant value discharge of the battery pack. Where is the negative constant value discharge of the battery pack? Are the following blocks connected correctly? Control is connected to subsystem. How can I connect it to the subsystem? Let's see the solution. Connect this into the parallel. Huh. Now, connect the signal name SOC coming out from the SOC cell port of the new pack to the input port of the demux block. Click run and see the result. As you can see, the result are already shown here, so I will not see the result. Navigate the individual cell by double clicking on the new pack block. And see there are molecules. Huh. Molecule cells. It is like a custom battery pack building. Okay. Oh, okay. Next, what we have to do, new pack block. Then the new model assembly block. And open the block parameter diagram from the new model. Navigate to the individual cell by double clicking on the new. Then the new assembly block. Where is the new assembly block? There is no new assembly block here. New module assembly. I can't see anything like that. Module assembly type 1. Yes. Then we have to double click on this part where we have to adjust the value to 0.3. Cell state of change. .3. Huh. Next, navigate back to the new. I still believe, still believe.
Why I'm feeling very dizzy. Uh, 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 uh. Okay, so the 60% course is completed because and a following block from the foundation library of the thermal sensor, temperature sensor and thermal reference. Oh, also add a PS link. Just give me one more time. Constant E port to the temperature sensor. Temperature sensor to the ABHM. ABHM to the reference. Connected via Simulink converter. Connected to signal assessment. हाँ मेरे को बहुत ज्यादा बोर हो रहा है और मेरा ना सर काम नहीं कर रहा इसलिए मैं कुछ भी गड़बड़ कर रहा हूँ. Next, at the temperature so okay, now we have to set the value to 295 kilo ohms. 295 Kelvin. To add a convective heat transfer. Convective heat transfer, then we have to set the value of the change of area to 0.1019 0.19 सॉरी माफ करें 1 दशमलव कृपया मुझे माफ करिए 0.1019 और हमें तपन ट्रांसफर कोएफिशिएंट 5 पे लाना होगा. मेरे को इतना बोर हो रहा है ना. फिर कनेक्ट, सॉरी मेरी गलती है. जो पोर्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में यार. तत्व बोलते हैं, ठीक है. तो जो हमारा ए तत्व है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का, उसको हमको ए बी एच एम में जोड़ना है इस तरह से, ठीक है. और फिर जो हमारा बी तत्व है उसको हमको नीचे वाले इस डब्बे से कनेक्ट करना है और फिर इसको ऐसे कनेक्ट करके सॉरी जोड़ के हमको अगली परीक्षा पे जाना पड़ेगा. अरे यार क्या मेरे को क्या हो गया. आज के लिए मेरे always... काफी है. मैंने एक काम करता, अब मैं कर ही इस पे रहा हूँ. तो जो पहले के नहीं किए ना ये फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि Hello. फटाफट कर लेता ना. कितना टाइम लगेगा इसमें, मेरे को नहीं 5-10 मिनट का काम है.
0.80 और 0.40। तो जब वो शुरू रहेगा तो हमको देना पड़ेगा 0.80, और जब वो बंद रहेगा तो हमको देना पड़ेगा 0.40। Not around, not around। मेरा सर घूम रहा है सच में, ऐसा लग रहा है कि मैं Batteries today are powering homes, driving electric vehicles, present the cell's behavior based on the क्या करने का है कि मेरे को सिमस्केप में बैटरी सेल्स में जाना है, डबल क्लिक करना है। टेबल बेस पे जाना है, चार, डबल क्लिक करना है। पाइनासोनिक का यूज करने का है। पाइनासोनिक, कौन सा वाला मॉडल? NCA5, NCA10, NCA10, ये वाला ही है। 0.5 वाला था ये। और ये ऐसे किया यहाँ पे, और यहाँ पे करने के बाद इधर ही सिलेक्ट ऑप्शन आता है, अप्लाई ऑल। अप्लाई ऑल करने के बाद इसको कर देंगे बंद। सबमिट, नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे अपन को भी डाल देगा 3-4 चीज, जैसे रजिस्टर। रजिस्टर पे जाएंगे, हम रजिस्टर लेंगे। कैपेसिटर नहीं, रेफरेंस पे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल रेफरेंस लेंगे। इसको बस ऐसे आड़े में कनेक्ट कर देंगे, तो वैसा आड़े में कनेक्ट होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा सा रोटेट करा देंगे तो एस्थेटिक लगेगा थोड़ा सा, है ना। एस्थेटिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना एस्थेटिक के काम नहीं होता। इसको ऐसे पॉइंट दे दिया वहाँ पे मैंने, अभी इसको कैसा खींचूंगा मैं और यहाँ पे ऐसा चिपका दूंगा। अरे बेवकूफ, देखना सर्किट परफेक्ट है ना, और क्या चाहिए तेरे को। अच्छा, सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया अपने। उसके बिना कैसा है ना, मैथ्स नहीं आता सिमुलिंग को। सिमुलिंग को मैथ्स सिखाने के लिए सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन लगता। बड़ा अजीब आदमी है। वोल्टेज सेंसर लेंगे, अकेले वोल्टेज सेंसर तो होगा नहीं। स्कोप लगेगा, स्कोप सेंसर वोल्टेज से कनेक्ट नहीं होगा। क्या लगेगा? PS टू सिमुलिंक। और ये अटक गया। चल रे बाबू, चल 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 ना, हाँ चल गया। उसके बाद PS टू सिमुलिंक लेंगे अपन। अब इसको अपन करेंगे ऐसे आड़े झेड़े में अटैक कर अटैच करेंगे, या ऐसा आड़ा अटैच किया इसको। इसको भी ऐसा आड़ा अटैच किया, इसको लिया, डाला किधर घुसाया, इसको घुसाया यहाँ पे, खत्म। चल रहे बापू। अभी अगर ना ओपन द ब्लॉक पैरामीटर, यहाँ पे ब्लॉक पैरामीटर खोलने का, किसका? टेबल का। एसओसी का पैरामीटर देखेंगे। एसओसी का पैरामीटर किधर है? एसओसी 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 नहीं दिख रहा मेरे को। काय में जाने का पड़ेगा उसके लिए? मेन में जाना पड़ेगा। मेन में ही हूँ मैं। मेन में जाने के बाद वहाँ पे एक्सपोज एसओसी, एक्सपोज एसओसी ये रहा। वहाँ पे अपन को यस पे क्लिक करने का है। जैसे अपन ने उधर यस पे क्लिक किया, अभी वहाँ पे एक नया पुट आ गया। नया पुट को क्या करने का है? ये लगा दिया एसओसी, और ये नया वाला पोर्ट लगा दिया सिग्नल असेसमेंट में। चल भाई, नेक्स्ट टास्क जल्दी जल्दी। टेम नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी ऐसे निपटाने का है मेरे को फटाफट से। ये भी एक ही स्कोप में दोनों में घुसेंगे, पर कैसे मैं बता दूंगा। हमको 2 ग्रिड बनानी पड़ेंगी यहाँ पे उसके लिए। स्कोप पे जाएंगे, स्कोप पे जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग खुलेंगी। यहाँ पे अपन 2 डिस्प्ले, पहली चीज को डिफाइन कर देंगे। 2 डिस्प्ले डिफाइन हो गए। डिफाइन होने के बाद तुमको डिस्प्ले लेजेंड दिखाना तो लेजेंड दिखा दो, जैसे मैंने लेजेंड दिखा दिया, डिस्प्ले लेजेंड। उड़ा देंगे इसको। उड़ाने के बाद वापस स्कोप पे गए। स्कोप पे जाने के बाद यहाँ पे ग्रिड की सेटिंग दिख रही है, ऐसे ग्रिड की सेटिंग लेंगे, ठीक है। सेटिंग लेने के बाद इसको अपन उड़ा देंगे। उड़ाने के बाद क्या करने का है? यहाँ पे नाम देने का है, जैसे कि नेम द वोल्टेज मेजरमेंट सेट। तो ये जो वोल्टेज मेजरमेंट हो रहा है ना, ये वाला,
इसका नाम देंगे अपन वी सेल। वी वी सेल दिया इसका नाम, ठीक है। और जो आईसोसी पे आ रहा ना ये वाला, इसका नाम देंगे आईसोसी अंडरस्कोर CELL। और इसके बाद इसको इस पे घुसाड़ देंगे। और जैसे अपन ने घुसाड़ दिया, घुसाड़ने के बाद सबमिट में मारेंगे। सबमिट में ऐसे धक्के मारा धप्पे से, नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे। और ये 68% खत्म। नेक्स्ट मॉड्यूल, ये मॉड्यूल से अपन ने शुरू किया था ना, अभी अपना बचा किताब फोर्थ का अपना बचा 20%, इतना का। वो कैसे खत्म करेंगे, अभी मैं जाता नेट पे। नेट पे अगर ये काम कर रहे, अभी इसको उड़ा देते। यस, उड़ा दे सिमस्केप, नहीं पढ़ने का मेरे को अभी। हाँ, अभी आऊंगा मैं मेरे ब्रेफ पे। ब्रेफ पे जाने के बाद क्या होगा कि मेरा जो ऑनलाइन है वो मेरा इससे कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा कि मेरा जो ऑनलाइन वाला है उस पर पहले से हो चुका है। ऑनलाइन वाला स्पीड अप प्रोसेसर रहता है एज कम्पेयर टू तुम्हारा डेस्कटॉप वाला। ये मत पूछना काय को, ठीक है। जो है वो है, जो है बेटे वो है। रिफ्रेश। भाई मेरे को ना भूख भी नहीं लग रही है, आज खाना ही नहीं खाया मैंने। पहले से मेरा वजन बहुत ही कम चलता है। हाँ। ब्राउजर पे ही चलना तो भाई। मैं वीडियो वीडियो नहीं देख रहा भाई, मेरे को बहुत बोर हो रहा है अभी। मैं फटाफट खत्म करता है इसको, मेरे को पता है करना क्या है। मेरे को समझ रहा है मेरे को कैसे करना है, मेरे को समझ रहा है कि किससे क्या हो रहा है। खुद की बैटरी बना दूंगा फिर मैं, नाम देंगे देवेश की बैटरी। 36% दिखा रहा है, क्या पागल वागल है क्या अभी तू। हटक गया ये। पता है क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम इतना हो रहा ना सच में, इतना दिमाग का दही मतलब खतरनाक ही। ऑब्वियसली लोड मार भाई, क्या 50% हो चुका है मेरा पहले से। 36 क्या बता रहा तू। हाँ, कौन बता रहा तेरे को 36। बेटे 36 नहीं, यहाँ पे दिखा रहा ना, दिखा रहा ना 68% हो गया। बेटे ऐसा ना चलत है हमारे यहाँ पे। अब भाड़ा में जाता You हूँ। always make sure your phone has enough. मेरे फोन में बहुत चार्ज है, नेक्स्ट चल। नहीं तो क्या। ना 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 ना। हाँ, माइक बंद कर रहा हूँ मैं, फटाफट सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है।